This is a web page, right? In this web page, see, these are the images written. Hey, I can write anything here, image PDF plus, and this is the more images and logo of the Google, Yahoo. And when I'm scrolling it down, it's showing me more stories, and here I can click. See, its pointer is changed. Yes, and I can click on it. Wow, I have got so many links and images. Web pages is looking so interactive, right? So, hello friends, welcome to your own channel. Let's study with Richa. Today we will start how to create the web pages. So, we will not learn all the things together to make it so messy. We will start step by step. So, let's start it. How we start to create the web page? First of all, we will learn that part. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर HTML. HTML is used to create the web pages, and its full form is hypertext markup language, which is a language used to make web pages for display on the internet. ठीक है, तो HTML documents are made up of text content and special codes known as tags. टैग्स के थ्रू ही हम इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, HTML5 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, जो स्टार्ट हुआ था HTML1 से, बट नाउ लेटेस्ट HTML5 is used. HTML5 is cross platform, that is it works on tablets, smartphones, notebooks and smart TVs. ये किसी में भी वर्क कर सकता है। और ये इसकी फीचर्स हैं। फीचर्स लाइक इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। This means that HTML commands can either be written in lowercase or in uppercase. Spaces and tabs can be used anywhere in the document because it does not affect the appearance of the document. And file is saved with .html file extension. HTML document is written in text editor like Notepad, Sublime Text, Credit, and word processor like WordPad, Word, and Writer. So in these writers also you can write the text. So here we will start writing the tags of the HTML5. I repeat again, if you have not subscribed my channel, please subscribe it. और एक चीज और, बच्चों को ये डाउट होता है कि ये जो सेशन रहेगा HTML लैंग्वेज का, ये 7th क्लास के लिए है, 8th क्लास के लिए है या 6th क्लास के लिए है, कौन सी क्लास के बच्चे इसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं? तो देखिए, कोई भी क्लास का बच्चा है जिसने HTML सीखनी है, चाहे वो ग्रेजुएशन का है, चाहे वो किसी कंप्यूटर की टेस्ट की तैयारी कर रहा है, या वो कोई बेसिक वेब पेज बनाना सीखना चाहता है, उनका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसपे उन्होंने वेब पेज क्रिएट करके देना है, कोई भी कहीं पर भी HTML लैंग्वेज यूज होती है, उसमें ये स्टार्टिंग एज अ बेसिक में सिखा रही हूँ आज। ठीक है, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्लास 6 के लिए होगा, 7 के लिए होगा या कौन सी क्लास के लिए होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर से। चलिए उससे पहले हम कुछ बेसिक टैग्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। Like HTML consists of text with special instructions known as tags. Each tag giving a specific instruction enclosed with angular brackets. Angular brackets से हम start करते हैं। HTML tag tells the browser how to organize and present the tag images or other content. Uppercase and lowercase can be used for typing tags. And it has two types of tags. One is container tag and one is empty tag. देखिए container tag क्या होता है, जिसको क्लोज करने के लिए आपको क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एम्प्टी टैग होता है जिसको आपको क्लोज करने के लिए टैग लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट द क्लोजिंग टैग टू क्लोज अ पर्टिकुलर टैग। ठीक है, सो हियर दिस इज अ कंटेनर टैग and this is the empty tag. Simple, write the tag name, write your content or the text, leave it, that's it. चलिए हम पहले इतना ही स्टार्ट करते हैं, then after we will do our work. Next theory part. देखिए, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम स्टार्ट लिखेंगे नोटपैड। हम नोटपैड पे बनाना सीखेंगे। We will click on notepad, open. Now see, in this notepad window, what we will do, we will write here the tag name. For example, we will write here angular bracket, explanation sign, doc type, HTML, and closing tag. Now press enter. HTML closing starting tag, HTML closing tag. This I have written the starting tag and closing tag. Now देखिए, अब हमने कोई भी टैग ऐड करना है, जैसे अगर हमने टाइटल ही ऐड करना है तो हम पहले इसमें एंटर प्रेस करके स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल एंड
आफ्टर राइटिंग टाइटल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज एंड नाउ राइट क्लोजिंग टाइटल. Now see, this I have written one tag within the another tag. So in this way, we will write many of the tags within the text. But what we have to take care, all tag, whatever the container tag it is, it should be closed when it is started. Okay, HTML tag is the main tag. This HTML and closing tag is the main tag. Everything should be written within the HTML and closing HTML tag. Okay, except the doc type tag. अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा वेब पेज क्रिएट हुआ. See, to save the document, we will right click here, File, Save. Now, here I write, चलिए डॉक्यूमेंट्स में हम एक अपना पेज बना फोल्डर क्रिएट करते हैं. दैट इज अ न्यू फोल्डर, HTML new. Now I click on it. In this I write, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और मैं इस पे लिखती हूँ फर्स्ट प्रोग्राम .html. .html is the extension of web file. तो जब भी हम हमारा वेब पेज क्रिएट करते हैं फाइल को .html के साथ ही सेव करते हैं. तो यहाँ पे जाके मैं ऑल फाइल्स कर देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ. ठीक है, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया. अब मुझे ये चेक करना है कि ये फाइल मेरे वेब पे कैसे ओपन होगी. सी, आई विल ओपन माई फाइल. देयर इज फर्स्ट प्रोग्राम. आई विल क्लिक ऑन इट. सी, अब यहाँ पे देखिए मेरा टाइटल आ गया माई फर्स्ट वेब पेज. ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे नेम आ गया माई फर्स्ट वेब पेज. अब मुझे ऐड करना है नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग जैसे कि अब मैं ऐड करती हूँ इसमें हेड. इन हेड आई राइट वेलकम टू माई वेब पेज और क्लोज कर देती हूँ हेड को. ठीक है, अब फाइल पे क्लिक कर देखिए. मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देती हूँ. जो मैंने अभी पहले वेब पेज बनाया था विदाउट सेविंग, it was showing only my first web page as a head, as a title, sorry, and there is nothing displayed on the main screen, nothing. So I will save it. Now I saved it. Now I will check my program. To check the output, I will refresh from this refresh screen. I refresh, see, welcome to my web page. अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी, सपोज अब मैं साथ में ही लिख देती हूँ वेलकम टू माय वेब पेज. दिस इज माय टाइटल and here I press two lines and I'm writing I am going to learn to create web page, then I will learn to create website. See, and then website is a collection of web page. That's it. Now see, मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी वेलकम टू माय वेब पेज, उसके बाद मैंने एक लाइन लीव की है. देन आफ्टर अगेन आई रॉट वन लाइन एंड देन अगेन आई लेफ्ट वन लाइन. राइट नाउ माय आउटपुट इज आई एम शोइंग यू अगेन. ठीक है, वेलकम टू माय वेब पेज ओनली. आई रिफ्रेश्ड इट स्टिल बिकॉज मैंने वो फाइल नोटपैड पे जो अभी न्यू लाइंस लिखी हैं उसके बाद सेव नहीं की. व्हेन आई मेक द चेंज एंड सेव इट, इट ओवरराइट द प्रीवियस फाइल. ठीक है, ओवरराइट करने का मतलब है कि जो मैंने पहले काम सेव किया था उसके बाद जो काम किया है वो सेव हो जाता है. पहले वाली काम उसको ओवरराइट कर देता है. ठीक है, सो हियर आई राइट फाइल एंड सेव. नाउ आई विल सी माय फाइल अगेन. हियर आई डू रिफ्रेश. सी, अब जो मेरी पहले वाली फाइल थी, देखिए मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ. जो मेरी नोटपैड फाइल है उसमें मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, वन लाइन लीव की. राइट, बट यहाँ पे तो लाइन लीव ही नहीं हुई. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स in HTML language, tags work, not how you are writing in the notepad file. आप notepad file में कैसे भी लिख रहे हो, कितने ही enter press कर रहे हो, कितने ही blank space दे रहे हो, कितना ही color change कर रहे हो, it does not impact on the web page. What impact on web page? You are writing within the tags. ठीक है, तो चलिए अभी हम start करते हैं. To make the change, right, if I write here
In the end, I write here B.Ed. Now let's save it. File, save. Now again I refresh it. See, it came on the next page, right? So there is no need to save the different files each time for doing the work. ठीक है, आप एक फाइल पे एक वर्क कीजिए, उसकी आउटपुट चेक कीजिए, अगेन वर्क कीजिए, उसकी आउटपुट चेक कीजिए. In this way you can cover all your tags within the minutes. तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं अभी हमारा नेक्स्ट वर्क. जो हमारी नेक्स्ट फाइल है दैट इज अ न्यू टैग्स इंक्लूडेड इन द HTML5. BR टैग मैंने आपको फिर इसका वर्क करके दिखाया था. तो न्यू टैग कौन से है? HTML5 include various tags that enable you to describe the different parts of your web page. Doc type declaration at the beginning of your page specifies that the document is written in the HTML. So actually when you write your doc type in the starting, you tell the browser that, you tell the software that this is your HTML file. ठीक है, so in HTML the doc type declaration is required. This is must to write. Next is navigation. Nav tag is used to define important navigational links to other pages on your site. Means if you are navigating to other page, for example in this if I write here I am navigating to other pages. Okay, so here you are navigating now, it should go on another site, so for that we use the nav tag. Header tag can be used to define introductory information like site name, company name, and logo and slogan. Header tag appears at the very beginning of the body of a web page. Body of a web page means that if I write here, in this tag, I write body tag, and this head tag I close here only. You can close the tag in the next line or in the same line. It does not impact because its working will be followed by the web browser. Okay, here you can write and as you want. Here I close body tag. Clear? Now, header. It should appear before the, in the header tag. See, it is written here. Header tag appears at the very beginning of the body of the web page. At very beginning of the body page means here. After beginning, we will write here header. What we want? HTML5. Now, this is my web page. Now we will see the output. Here I do the change, file, save, and here the refresh. See, HTML5 as a header it comes there. And if I see here, if I write it, this body as capital BODY. Okay, now let's see the change, file, save, refresh. Nothing changed. Here body is in the small letters and here body is in the capital letters, but it does not impact the output. What does it mean? This is a case sensitive language. Okay, चलिए next पढ़ते हैं अभी. Next is footer. Footer tag is used to put copyright information, contact information, and other small print items on a web page. Section tag offers a generic way of grouping related information on a web page. Here grouping means that in this page, see, this is one group of the images, right? This is one group of the Google logo. Then after this is a one group of the different links. That is Google Forms, YouTube, Wikipedia, right? And this is also one group of the top stories. Then after the links started. So this is a different sections we made on a simple web page. So this is done with the help of the section tag. Okay, next is article. Article tag is for defining a self-contained information on a web page. जैसे आप अपने कोई एक information है वो information के लिए information contain कर रही है, that you do for the article. Aside, you can mark information on your page as tangential to the main content with the aside tag. The aside tag is useful for defining full codes, glossary items, glossary terms, और सेट ऑफ लिंक्स रिलेटेड टू एन आर्टिकल. कि आप अगर कोई भी, जैसे हम बुक देखते हैं, ठीक है, एक बुक के लास्ट में कुछ लिंक दिए होते हैं कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर टू दैट लिंक. Okay, so for that case we use a aside tag.
Canvas tag enables you to define a black drawing area on your web page on which you can create shapes. See, if you write the canvas, that means you give the users, you give permission to the user to write something on that part. So, and we do this also, na, like this, the students open the canvas and write something, draw something, and enjoy, right? That part is made separate so that user can pass their time. User can make that site interactive. Next is audio and video. HTML5 offers a new video tag for embedding video clips and an audio tag. Means आप देखते हो ना कि कई बार आप कोई वेब पेज ओपन करते हो और वहां पे आपको कोई वीडियो स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक या कोई ऑडियो फाइल होती है दैट इज एम्बेडेड विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टैग्स. ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे कि एच आर साइज 10. चलिए हम यही टैग एक बार ऐड करके देखते हैं. We write here after BR, we write here HR size equal to 10. Now we will open our file, save. See, what was HR? That was horizontal rule. मतलब एक horizontal line divider की तरह दो टेक्स्ट के बीच में आप एक डिवाइडर की तरह लगा सकते हैं. ठीक है, HR. अब हम यहाँ पे स्पेस बढ़ाकर देख लेते हैं 20 and here is file save. Refresh it. See, width उसकी बढ़ गई, right? So in this way HR works. Next is entities. Entities are the special characters such as copyright symbol, like, or a fraction that you can add to a web page by using special codes. Entities present characters not readily available on the keyboard. All entities are preceded by an ampersand and followed by a semicolon. For example, code and percent copy adds copyright symbol this to your web page. अगर आप and copy लिख के semicolon लगाओगे तो आपका ये copyright का symbol आपके web page पे आ जाएगा. ठीक है, so this was the entity. Next is guidelines for writing HTML code. That is, you should always check your code to avoid HTML errors. Make sure that your tags have brackets, angular brackets, closing brackets, slash sign. Okay, and the nested should be checked out. Like first, in the HTML sequence, the tag sequences, the tag which is written at the last should be closed at first. ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होता है. जो सबसे लास्ट में टैग लिखा है वो आपको सबसे पहले क्लोज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे ऐड करती हूँ आई के आगे P, then after I write here B, and in the end, wait, in the end I write here closing B and then closing P. मीन्स द टैग जो सबसे लास्ट में आपने लिखा था स्टार्टिंग टैग वो सबसे पहले क्लोज होगा. इन दिस सीक्वेंस दे वी फॉलो. फाइल सेव, लेट्स चेक इट्स आउटपुट. हियर रिफ्रेश इट. सी, नेक्स्ट लाइन में आ गया और बोल्ड हो गया बिकॉज P is used for paragraph, B is used for bold. Clear? So in this way also you can do. Our next topic is rendering HTML. This part we will do in our next session. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and like my video if you like it. If you want videos for the particular topic, please write on the comment box. I will definitely make it on time. I will try to make it on time. So I hope आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. So we will meet in our next session after 2 days because we have some urgent work. So we will meet after 2 days. Have a nice day.